map. Yes. Yes, dear. Start explaining it. Beta, you are mute. Ma'am, my topic is French Revolution, in which the first topic is the struggle to survive, in which I have explained how the people of France struggled during the struggle to survive. Then, how subsistence crisis happens after the struggle to survive. Then, after a growing of middle class in France. Then, the revolution and everyday life. Then, abolition of slavery. After that, how women helped in the revolution. Hmm. And then I have explained that how France has abolished the monarchy system and how the region of terror occurred in the France. Then rise of Napoleon, and after that last one is the outbreak of France becomes a revolution constitution monarchy. Very good. Amazing. सेकंड में को में जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी उसके बहुत सारे की पॉइंट्स जिसमें एस्टेट्स डिवाइडेड भी थे, राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ था, फिर बाद में कुछ ऑथर्स के नाम भी लिखे हैं। तो उसके बताओ, बाद क्या बताऊं? ऑथर्स के नाम बताओ। ऑथर्स वो तो इधर है अभी। जैसे सबसे पहला है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रोसेसियो ने लिखा था, फिर ये टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो जॉन लॉके ने लिखा था, फिर द स्पिरिट ऑफ लॉ जो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, मॉन्टेस्क्यू, फिर यस। देन आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन जिसमें जो स्टेट जनरल्स की मीटिंग आई थी उसके बारे में लिखा है, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हर स्टेट से आए थे, उधर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, क्या और बाद में थर्ड स्टेट ने 20 जून को नेशनल असेंबली फॉर्म की थी और उनको एबेसियस और मेराबियो ने लीड किया था, और बैड हार्वेस्ट की वजह से 14 जुलाई को बेस्टिल भी स्टॉर्म हो गया था और बहुत सारे मार्केट में स्टोर्स भी बहुत सारे तोड़ दिए गए थे। मिराबियो और एबेसियस के बारे में भी लिखा है जिसमें जैसे मिराबियो एक कॉन्फिडेंट स्पीकर थे और एबेसियस ने व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट लिखा था, और कैसे 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और कुछ राइट्स मिले थे मैन को, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक जिसमें लुई 16 को पर्शिया के खिलाफ, मतलब पर्शिया के साथ नेगोशिएशंस फॉर्म कर रहे थे वो, तो सारे नेशनल असेंबली को वो पता चल गया और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी थी, और तब मर्साइलिस जो रॉबर्ट दे एल इल्से ने कंपोज किया था, वो सॉन्ग भी बहुत गाया गया था जो अभी फ्रांस का नेशनल एंथम है। फिर बाद में लुई 16 को क्या बोलते हैं, लुई 16 को मार दिया गया था प्लेस देला कॉनकोर्दे पे, रीन ऑफ टेरर उसके साथ शुरू हुआ था और बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स भी अराइज तब हुए थे, जिनमें से जो सबसे पावरफुल था वो जैकोबियन क्लब था, जो जिसके जो हेड थे उनका नाम रॉबेस्पियर मैक्सिलियन था, और उन्होंने गुलेटिन सिस्टम लाया था, और जब वो गिल्टी पाए गए थे तो उनको भी गिलेटिन से ही मारा गया था इन 1794। फिर वो द रेवोल्यूशन, इसमें वुमेन्स के बारे में मैंने बताया कि वुमेन्स ने क्या हिस्सा लिया था और उनके कौन से क्लब्स थे, उन्होंने क्या क्या लड़ाई की, लेकिन आखिर में तभी उनको 1946 में जाके वोट करने का राइट मिला उन्हें। फाइन, गुड। फिर अबॉलिनेशन ऑफ स्लेवरी, नैंतेस और बॉर्डॉक्स के बारे में बताया, जो पोर्ट्स थे फ्रांस के जहाँ पे अफ्रीका से बहुत सारे लोग लाए जाते थे जिन्हें हम लोग क्या था ट्रेड स्लेव चल रहे थे, और
न्यूयॉर्जर्स करके मतलब उन लोग को स्टेट किया जाता था, ब्लैक पीपल को। और कब वो अबॉलिश हुआ, कब उसे वापस नेपोलियन ने लाया, फिर आखिर में 1848 में वो जाके ख़त्म हुआ। द कंक्लूजन है रिवॉल्यूशन एंड यूरोप्स लाइफ, एवरीडे लाइफ। तो उसमें क्या आखिर में हुआ, 1789 के बाद कौन से राइट्स मिल गए, और जो सबसे फेमस राइट ऑफ मीडिया था। इससे इंडिया दो लोगों को इंस्पिरेशन मिली थी, जो हैं कि राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान को इससे इंस्पायर हुए थे। और पूरे यूरोप इस रेवोल्यूशन की वजह से वो हुआ, पूरा यूरोप प्रभावित हुआ था। और नेपोलियन बोनापार्ट ने कैसे कैप्चर किया था पूरे यूरोप को, और बाद में वो 1815 में डिफीट हो गया था। यस, और एट वाटरलू बैटल। इसी की वजह से आगे बहुत पूरा क्रोनोलॉजिकल एक जो धीरे धीरे इवेंट्स हुए थे, और उसने इवेंट्स को लीड किया था, क्योंकि वही यस, सबसे ओके, परफेक्ट। मैम ठीक है मैम। तो फ्रेंच मैम, आई हैव डिवाइडेड द French Revolution in two parts. First part is of the revolution, which is the main part of, and the second part is the uh, the changes, the effects after the revolution, and even the before, and the reasons why the revolution had to start. Ma'am, Okay. first is the social setup, in which there are three estates: clergy, nobility, and third estate, which consists of big businessmen and peasants, and some merchants and that. And when the subsistence crisis began, it was because of drought or hell, and even the wages could not match because of some economical issues. And next is the abolition of slavery, which was actually the last topic, but I added it first. So it consisted of that the slavery was firstly abolished by Jacobins, and but Napoleon reintroduced it in 1804, and it was finally abolished in 1848. And next is the outbreak of revolution, and in that I wrote about the national formation of National Assembly, that how it became. And then France becomes and why France becomes a republic, because of rise of Jacobins and execution of king and queen, and the reign of terror and directory rules. ओके, फाइन, ठीक है। इफ इट कम्स लास्ट, कीप इट लास्ट। जैसे आप खुद बोल रहे हो कि एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी लास्ट है, पर मैंने पहले कर दिया। डोंट डू दैट, बिकॉज व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग दैट ना, तब आपको हो सकता है, बिकॉज एंड टाइम पे यू आर वेरी मच एक्यूरेट, जल्दी 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 जल्दी, राइट? हाँ, दैट्स व्हाई। सो इट मे हैपन कि आपको लास्ट टाइम पे यही माइंड मैप आपके दिमाग में याद रहे, नहीं इसमें तो लास्ट में था, तो एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी लास्ट में ही है, ओ फर्स्ट है तो फर्स्ट ही होगा, राइट? इस तरह से आपको हो सकता है स्किप। सो ट्राई टू मेक इट इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। फाइन, यस मुस्कान, कम ऑन, इट्स योर टर्न। मैम, यस रचित, यस नेक्स्ट टाइम जैसे सोशलिज्म चैप्टर है, तो उसमें मैम एक First of all, as it was a mind map, I have drawn here a brain in which it states that this is the mind map of French Revolution. Then I have started with the French colony during 18th century, in which I have highlighted the main points. In this starts with the Louis XVI, who was the king of Bourbon family during 1774. Then this society was divided into three estates: clergy, nobility, and peasantry. Then we saw about the struggle to survival, in which there was a situation of subsistence crisis, in which population rose from 23 to 28 million, but there was not a single piece of bread to survive. Then we saw the rise of middle class and contribution of philosophers. Then the next topic is outbreak of revolution, in which we saw the gathering in an assembly led by Louis XVI for discussing the new taxes.
in that many of the second and third estate people were included, but as they were made ashamed indirectly by Louis XVI, they went in Versailles and their tennis court oath happened, and then France became constitutional monarchy. And then we saw in some facts about France that the national anthem is La Marseillaise. It was composed by Roget de Lezes, and French Revolution was a duration of 10 years, which held from 1789 to 1799. Then we saw how France became monarchy to republic on 21st September 1792. France abolished monarchy and became republic. We saw some rise of political clubs, downfall of Robespierre, and the reign of terror. Then we saw women's role in the revolution. They also took equally part in all the protests and finally got right to vote in 1946. We saw then abolition of slavery, in which triangular trade was there between Europe, Africa, and America. The slaves were forced and included in this trade, but finally in 1848 there was abolition of slavery. Then we saw revolution in everyday life, in which abolition of censorship was there. Freedom among every citizen was there to live, to speak, to eat, and to follow the laws. Then we saw the part of Napoleon Bonaparte, in which he was seen as a modernizer of Europe. He crowned himself as the emperor, but we saw that fall of Napoleon in the Battle of Waterloo, because he became the king and he gave the nearby regions to his family to rule over, and when the people he was defeated. I have written here a fact of French Revolution about Camille Desmiquels, who was one of the most influential writer of French Revolution. And this is thank you in French. Okay, Je Jeeves. vous remercie. Amazing. Jeeves remercie. Okay. That's amazing. Rachit and और किसका हुआ? Tia. Right? Right? Yes, ma'am. मुस्कान, मोहित, रचित और टिया का हुआ है आज. Monday, rest of the students be ready for this. And up till that, please try to send me the pictures today as well. Okay, don't forget this. आप लोग आज ही मुझे माइंड मैप के साथ एक अच्छा सा आपके साथ का फोटो भेजना, ठीक है? एंड इफ पॉसिबल तो आप उस माइंड मैप को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो भी भेजोगे तो भी दैट्स फाइन. हम क्या बोल